Yes, जो 7 नंबर भी खाली बड़ा नहीं है। टाइम सही से लग जाए, पब्लिक यहाँ आके परेशान हो जाती है। आज में 70-80 बॉडी हो चुकी हैं। शाम तक 150 बॉडी का टारगेट है यहाँ पे, ठीक है। कुछ बॉडी जगह नहीं रह जाती तो कुछ बॉडी वापस करनी पड़ती है। हॉस्पिटल वाले सुबह से ही भेज देते हैं, यहाँ साफ़ सफाई हो नहीं पाती है। 10 दिन हो गए लगभग ऐसे जो ये माहौल चल रहा है। हम लोग जगते ही रहते हैं महाराज। सुबह हम लोग 7 बजे से चालू कर देते हैं कार्य और फिर डेड बॉडी जलाने में 2 बजे तक, रात 2 बजे तक टाइम लगता है। 2-3 घंटे मिलते हैं आराम करने के लिए। खाना तो सुबह से खाया नहीं, बस पानी के सहारे से दुकान है तो वहाँ से पानी, यहाँ पे टैंकर नहीं आता पानी का, टाइम से कार्य करते रहते। शाम को 10-11 बजे भोजन होते हैं। इधर आओ, ये कहाँ गए? आगे वाले आ जाओ भैया। 900 बॉडियों का दाह संस्कार हम कर चुके हैं। ये सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का संस्कार है जी। लकड़ी पे, सैया पे लिटाया जाता है, लकड़ी दाह संस्कार होता है। फिर दूसरे दिन जो है अस्थि संचय का कार्य होता है। फिर उसके बाद गंगा जी जाएंगे अस्थि विसर्जन करने। बुलाओ, कहाँ है बंदा? अरे आप बुलाओ, भी आज कम है। इधर आओ, फिर दोबारा। ये जो है बहुत सारी डेड बॉडियाँ, सबको जल्दी रहती है तो जल्दी काम जो है कार्य हम लोग करा देते हैं थोड़ा। सर, अगर आप इस टाइम गवर्नमेंट को दोष देंगे तो ये सबसे गलत बात है, क्योंकि जिस तरह जब शुरू में कोरोना आया था उस टाइम हम जिस तरह सैनिटाइज और मास्क का यूज कर रहे थे, पूरी फैमिली डर था, एक भय था। उस लोगों ने उस पर लापरवाह बरता है। इसमें लोगों ने सोचा कोरोना चले गया। देखिए, एक्चुअल क्या है, मेरा जो पर्सनल वो है उसमें गवर्नमेंट फेलियर है। जब इनको कंट्रोल करना था उस समय इनने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी। आप ये बताइए, फर्स्ट जब लास्ट ईयर कोरोना में यही लॉकडाउन पहला फर्स्ट ऑप्शन था सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वो मास्टर स्ट्रोक था सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो मास्टर स्ट्रोक है, और आज वो मास्टर स्ट्रोक कहाँ गया? गवर्नमेंट ने जो ये लॉकडाउन खोल दिया है बहुत बुरा। हाँ, तो गलती तो गवर्नमेंट की है। फिलहाल जो दवाई ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है, बेड नहीं है, ये तो लापरवाही तो गवर्नमेंट की है। बाकी लापरवाही पब्लिक की भी है। थैली नहीं मिलेगी, ये कहीं मार्केट से ले लेना, या अपने आप 1 मीटर कपड़ा ले। सुबह कितने बजे आना पड़ेगा जी? सुबह 8 बजे। 8 बजे हो जाएगा, इससे पहले नहीं होगा। अरे पंडित जी, भैया परेशान मत करो, काम हो जाएगा। इधर आप कर रहे हो? इधर आप जल्दी हटिए भाई। जान है तो जहान है।
डर जी सबको लगता है, हम भी फैमिली वाले हैं, लेकिन डरें क्या, कर्म है हमारा, कर्म है, कर्म तो करने पड़ेगा। ब्राह्मण है, शुरू से करते चले आए हैं, एक दूसरे के साथ अगर हम नहीं देंगे तो कौन देगा। Dead for decades. Now he barely ever stops working. मतलब मैं इससे भयावह स्थिति नहीं हो सकती। I've never seen such a terrifying situation. I can't believe that we're in the capital of India. People aren't getting oxygen and they're dying like animals, he says. We don't even have enough resources to cremate them डेड properly. बॉडी जलाने के लिए, उठाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए हर जगह आदमी परेशान। Outside, Shivangi Mehra is on the phone organizing oxygen for the hospital she works in. Nothing is being done. I don't know government is sleeping or what they are doing. I am totally disheartened in the situation which I am seeing. Government is a literal failure. A person cannot live here in Delhi. A person cannot even die peacefully in Delhi. She's waiting to cremate her grandfather, who died, she says, because there wasn't enough oxygen. This small hospital in North Delhi is facing a daily struggle. Ma'am, we have been spending sleepless nights since last 1 week. I mean, at times we feel like crying because we are not able to help patient properly. Every day this is the same scenario. We are left only with 2 hours of oxygen, 3 hours of death, and we are only getting assurance from the system, no oxygen. And so, families are being told to organize oxygen. At one medical shop, we found people with empty cylinders waiting to buy their own supply for loved ones who urgently need it. For many here, the government's promises of rushing in oxygen are coming too late. Families left asking why something so basic is unavailable. Every crematorium we've been to, we've seen body after body being brought in. It's hard for anyone to keep count, but what workers have been telling me is that the real scale of deaths caused by COVID-19 in India is a lot higher than what official numbers reflect. And a lot of those who've died right now have done so because they couldn't get oxygen in time. Jitendra Singh Shanti runs a group of volunteers here. Even young people are dying. It's a very bad situation. If it keeps getting worse, we'll have to burn bodies by the side of the road, he says. There is a sense of abandonment in this country. Citizens are stepping up to do what a government should, left to fight a vicious pandemic on their own. Yogita Lamai, BBC News, Delhi. Well, tonight a first shipment of British assistance to India is leaving the UK. Other countries are also pledging support. Our diplomatic correspondent Paul Adams is here in the studio. What kinds of help is being sent, Paul? Well, Michelle, this was really the weekend when the world stood up and took notice of what's going on in India, not least because a wildfire of infections like that in a country as large as India, 1.4 billion people, is clearly not just a local danger, it's a global danger. And given those numbers, any reaction seems like a bit of a drop in the bucket. But those offers are coming in. The United Kingdom is sending 495 oxygen concentrators, 140 ventilators, and the Foreign Secretary Dominic Raab says there could be more. The EU has activated what it calls its civil protection mechanism, where member countries pool their emergency supplies, again with an emphasis on oxygen and medicines. And the US, perhaps stung into action by moves on this side of the Atlantic, has said that it will immediately supply the raw materials for vaccines, and that'll involve reversing some export controls put in place back in February, and supply protective gear and medical equipment. And Dr. Anthony Fauci, the president's chief medical advisor, has even suggested that the United States could supply India with some of its unused AstraZeneca vaccines. That's a vaccine that has not yet been approved for use in the United States, and it's got lots of it, and it doesn't need it itself. It's already supplied some of it to Mexico and Canada earlier in the year, so it is coming under some pressure to do that for India as well. Paul Adams, thank you very much.